Over the population statement by RSS Chief Mohan Bhagwat, Asaduddin Owaisi of the AIMIM has now contradicted it and in fact slamming the RSS chief. Owaisi has said, and I quote him here first, Bhagwat must begin with Modi and Yogi. But remember that RSS Chief Mohan Bhagwat had warned that there is a declining fertility rate. Bhagwat said, society will perish if the fertility rate falls below 2.1. Here's what Asaduddin Owaisi said to them. माशाल्लाह से मेरे को 6 बच्चे हैं। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, फिर वो आप लोग बोलेंगे, वो पीछे से बोलेंगे, वो इसी ने ऐसा बोला, और उसके 6 बच्चे हैं। नरेंद्र मोदी के भी 6 भाई हैं, अमित शाह के भी माशाल्लाह अच्छे हैं। अपनी मोहन भागवत तो जब उन्होंने अपने आदमी को बना रहे सीएम यहाँ पर, तो उनको बोलना चाहिए उनके आदमी को, भाई तू स्कीम निकाल ले बच्चे पैदा करने की, क्या है स्कीम बता दो। All right, so on the population debate, Owaisi goes directly toward Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah and other leaders of the BJP. Ritwik Bhalekar joining me from Mumbai over this. Ritwik, clearly Asaduddin Owaisi making it as personal, even though Mohan Bhagwat hadn't said so. Yes, absolutely. The opposition is now crying foul, and they are also targeting the main BJP leaders over this population debate, because many of the leaders are not married, and now a personal remark has been made just the way Owaisi did. But the statement which came from RSS Chief Mohan Bhagwat counts to be a very important one, as the government is saying that population should be controlled, but at the other end, RSS chief promoting population increase is somewhat is under the fire right now. Right, Ritwik, we'll be tracking all the latest on what this unfolds into, and could it become a bigger debate and could take communal overtones too. Thank you, Ritwik, for now, because RSS Chief Mohan Bhagwat has said society will perish if population growth rate goes below 2.1. Speaking at an event in Nagpur, Mohan Bhagwat expressing concerns over India's declining fertility rate over generations. Referring to India's population policy, RSS chief has said people should at least have 3 children for society's survival. So 3 children is RSS chief's suggestion. Now the opposition has been quick to target him over this. Congress has said BJP should first start giving jobs to the existing population. Congress Neta Umang Singhar went on to add Mohan Bhagwat should begin with Prime Minister Modi and Yogi Adityanath if population is such a concern. What did other leaders add on to that? Let's listen in. संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे. चिंतेचा विषय आहे. याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1 च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, नाही 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. देखिए, सामान्यतः तो 2 बच्चे होते हैं, लेकिन मोहन या भागवत जी अगर चाहते कि ज्यादा बच्चे हों तो क्या देश में ऐसी बेरोजगारी है, तो युवाओं को जो आज है उनको नौकरियां तो मिल नहीं पा रही. जनसंख्या के अंदर महाशक्तिशाली बनाने में मोहन भागवत जी चाहते. तो मेरा इनसे सुझाव है, मोहन भागवत जी है, मोदी जी है, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे पहले ये शुरुआत करें. अगर इन्हें जनसंख्या की इतनी चिंता है कि विलुप्त हो रही है, तो सबसे पहले ये प्रजनन की शुरुआत करें. मान्यवर मोहन भागवत जी को जनसंख्या नियंत्रण पर वक्तव्य देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने वैसे नेताओं से विमर्श करने की आवश्यकता उनको होना चाहिए
जो आए दिन जनसंख्या नियंत्रण पर सार्वजनिक रूप से अपना विचार प्रकट करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई मर्तबा बिहार और देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण के मॉडल को प्रस्तुत किया है और बिहार में उसको महिलाओं को शिक्षित और जागरूक कर जनसंख्या नियंत्रण के मामले को कम करने का एक संदेश